Hello everyone, I am Harleen from Officer's Mind. हमारी पर्सनालिटी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस। एसएसबी इंटरव्यू में असेसर्स हमारी पर्सनालिटी को ही जानने की कोशिश करते हैं थ्रू ऑल द थ्री टेक्निक्स दैट इज साइकोलॉजी टेस्ट, इंटरव्यू एंड जीटीओ। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का इसमें बहुत बड़ा रोल है। I'll tell you what it means, SSB में where all it comes into play और आप इसे कैसे इन्हांस कर सकते हो। तो क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस? ये आपकी स्किल्स एंड एबिलिटीज़ हैं रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग, मैनेजिंग एंड यूजिंग इमोशंस इफेक्टिवली। ये आपकी अपने इमोशंस को बैलेंस करने की एबिलिटी है एंड इट ऑल्सो हेल्प्स यू इन अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस ऑफ पीपल अराउंड यू। इसमें हम बेसिकली बात करते हैं सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी एंड सोशल स्किल्स की। ऑल दीज थिंग्स impact your interpersonal skills. And in order for you to qualify your SSB interview, it is very important to have good interpersonal skills. इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस को सही तरीके से समझना बहुत क्रूशियल है। तो पहले I'll explain to you through examples कि SSB में how does emotional intelligence affect our decision making ability. Now let us take an example of group discussion in this case. What is the emotional intelligence requirement here? क्या आप दूसरों का पर्सपेक्टिव समझ पा रहे हो? Are you actively listening? Are you expressing your thoughts assertively without being confrontational? क्या आप ensure कर रहे हो that all the participants have an opportunity to express their views? Can you manage conflicts diplomatically? Or let's say in group planning exercise, you are planning a strategy for a given task with a group. Are you being receptive to team members' ideas? Are you resolving conflicts diplomatically and maintaining a positive and motivating tone? क्या आप सबके सजेशंस को एक्नॉलेज कर पा रहे हो? पर्सनल इंटरव्यू में you are answering questions about personal experiences, your strengths, your weaknesses and your motivations. तो आप इसमें सेल्फ अवेयरनेस को डेमोन्स्ट्रेट कर पा रहे हो या नहीं? आर यू मैनेजिंग नर्वसनेस इफेक्टिवली और नॉट? आर यू एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस अप्रोप्रिएटली? इन योर साइकोलॉजिकल टेस्ट, आर यू प्रोवाइडिंग ऑथेंटिक एंड कंसिस्टेंट रिस्पॉन्सेज? क्या आप इमोशनल स्टेबिलिटी दिखा पा रहे हो अपने रिस्पॉन्सेज में? कैन यू शो अडेप्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस इन योर रिस्पॉन्सेज? कमांड टास्क में कैन यू इंस्पायर एंड मोटिवेट योर टीम मेंबर्स? कैन यू अंडरस्टैंड देयर कंसर्न्स? कैन यू अडेप्ट to the leadership style according to the need of the group? While you are filling out your PIQ form, can you write your achievements modestly? Can you address challenges without dwelling on negativity? क्या आप अपनी ग्रोथ एंड लर्निंग के ऊपर एम्फेसाइज कर पा रहे हो? Now in GTO, when you are delivering a lecturate, can you express your ideas with clarity? Can you maintain composure? Can you adjust your communication style based on the perceived interests and understanding of the audience? Psychology test के अंदर situation reaction test में can you provide practical and balanced responses that consider the emotional aspects of the situations, and can you demonstrate empathy? GTO में under a progressive group task, can you collaborate with your team members? Are you open to suggestions given by them? Can you provide constructive feedback to any one of them? And can you also take a constructive feedback given to you? On the last day of your SSB, when you have your board conference, यहाँ पे आप अपने सारे assessors को एक साथ मिलते हो. What is the kind of feedback that you give?
Also, can you accept feedback gracefully? Can you express commitment to self improvement? क्या आपके अंदर एक पॉजिटिव एंड लास्टिंग इम्प्रेशन लीव करने की एबिलिटी है? In your GTO, when you have your individual obstacles, can you always stay focused on the task that you are doing? Can you manage your stress efficiently? Can you maintain a positive mindset even when you are doing obstacles? Now, in group obstacle race, which is a group activity, can you coordinate with your team members very well? Can you adapt according to the pace and speed of the group? Can you encourage your team members? Now, in psychology test, WAT या फिर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट एक डायरेक्ट एबिलिटी है आपकी किसी भी वर्ड के ऊपर एक ऐसा सेंटेंस बनाने की विच टेल्स समथिंग अबाउट योर पर्सनैलिटी। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपने बैलेंस थॉट्स असेसर्स को दिखा पाते हो या नहीं। नाउ लेट्स से किसी भी ग्रुप टास्क में इट कैन बी GPE, it can be command task, it can be your obstacles, anything. There is something that you decided to do and you could not do that. ऐसी situation में how do you respond to a failure? Now again, can you maintain your composure? Can you lift each other up? Can you focus on learning from this experience? Can you support your team members here? आप क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करते हो, पॉजिटिवली और नेगेटिवली? इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। एट द एंड, आर यू विलिंग टू लर्न एंड ग्रो? आर यू एक्नॉलेजिंग एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट और नॉट? नाउ यू नो दैट SSB में आपके जितने भी टास्क हैं, be it related to your psychology test, related to your GTO, and even your interview, all of this is done under a specific frame of time. Now, during this time, can you effectively manage your stress? Can you prioritize things effectively? Can you maintain a calm and composed mind? क्या आप फोकस्ड रहते हो या नहीं रहते हो? Now, when you provide feedback to your team members, are you being tactful when you do so, or are you being very blunt and you don't care about anyone's emotions? Now, within a group, how do you handle disagreement? Can you initiate finding a common ground? क्या आप बात करके अपने ग्रुप मेंबर्स से कुछ कॉमन ढूंढ सकते हो जिसके ऊपर आप सब बातचीत कर सकते हो? आप क्या आप वो अपने ग्रुप में लिंक हो विच ब्रिंग्स एवरीवन टुगेदर? इट इज़ सपोज टू बी यू। Now, how do you express enthusiasm for defense services? Are you telling them your sense of purpose, or are you just beating around the bush? Can you organize your thoughts effectively? Can you tell them your emotional desire to serve or not? ये कुछ एग्जाम्पल्स थे where emotional intelligence comes into play in SSB. Now I'll tell you ways in which you can enhance emotional intelligence. What is self-awareness? क्या आप अपने खुद के इमोशंस को रिकग्नाइज कर सकते हो? आर यू अवेयर अबाउट इट? डू यू नो योर स्ट्रेंथ्स एंड योर वीकनेसेस? डू यू हैव अ रियलिस्टिक सेल्फ असेसमेंट और नॉट? सेल्फ रेगुलेशन। क्या आप अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हो? क्या आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो? कैन यू स्टे काम अंडर प्रेशर और नॉट? क्या आप अडेप्टेबल हो?
क्या आप फ्लेक्सिबल हो अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सिचुएशंस और नॉट? मोटिवेशन, क्या आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स को लेके मोटिवेटेड हैं या नहीं हैं? डू यू हैव पैशन फॉर वर्क? डू यू हैव अ पैशन टू इम्प्रूव ऑलवेज? क्या आप हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होते हो regardless of a situation? Are you always resilient? Now you need to show empathy. आपको दूसरों की फीलिंग्स, दूसरों के इमोशंस को यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. आप एक सिचुएशन को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखिए एंड अंडरस्टैंड ईच ऑफ दोज पर्सपेक्टिव्स. आप दूसरों के प्रति कंपैशन शो करिए एंड शो सेंसिटिविटी टुवर्ड्स अदर्स. Under social skills, you should build and maintain positive relationships. दूसरों के साथ कम्युनिकेशन अच्छी रखिए. अपने जितने भी इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको रिजॉल्व करिए. कभी भी अपने मन के अंदर कोई बात मत रखिए. यू शुड ऑलवेज रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स. इमोशनल अवेयरनेस, आपको अपने इमोशंस के बारे में तो अवेयरनेस रखनी ही है, बट यू ऑल्सो नीड टू बी अवेयर अबाउट द इमोशंस ऑफ पीपल अराउंड यू. अगर एसएसबी की बात करें देन यू नीड टू बी अवेयर अबाउट द इमोशंस ऑफ योर ग्रुप मेंबर्स. इसमें आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे भी फोकस करना है एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड ईच अदर थ्रू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑल्सो. कम्युनिकेशन स्किल्स में आपको अपने इमोशंस क्लियरली एंड असर्टिवली एक्सप्रेस करने आने चाहिए. यू शुड लिसन टू एवरीथिंग अटेंटिवली एंड यू शुड बी वेरी एम्पैथेटिक while you are listening. इसमें अगेन यू हैव टू यूज़ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपने अपने स्ट्रेस को इफ़ेक्टिवली मैनेज करना है. यू नीड टू कोप अप विद योर स्ट्रेस. सो द फर्स्ट थिंग फॉर यू टू कोप अप विद योर स्ट्रेस इज नॉट टू गो इन टू अ फेज ऑफ डिनाइल. पहले तो एक्सेप्ट करो दैट देयर इज़ समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, देन यू स्टार्ट कोपिंग अप विद दैट. जब भी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन होगी इन फ्रंट ऑफ यू, you always have to maintain your calm and your composure in that situation. आपने healthy stress reduction strategies adopt करनी है. आप कितने adaptable हो? Are you open to change? Are you willing to learn new things or not? क्या आप न्यू सिचुएशन, एक नए इन्वायरमेंट के साथ अडेप्ट कर पाते हो या नहीं? क्या आप इनोवेशन एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस सीख पाते हो? क्या आप सारी लर्निंग, न्यू लर्निंग इनोवेटिव तरीक़ों से क्या आप उसको एम्ब्रेस कर पाते हो? दैट इज़ योर अडेप्टेबिलिटी. अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन होती है, हाउ डू यू हैंडल डिसअग्रीमेंट्स? ऐसा तो नहीं होगा दैट पीपल ऑलवेज अग्री विद यू. स्पेशली वी टॉक अबाउट एसएसबी एंड जीटीओ टास्क्स, यू विल सी दैट जीडी में, ग्रुप डिस्कशन में, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में पीपल विल नॉट अग्री विद यू. तो इस सिनेरियो में आप कॉन्फ्लिक्ट्स को कंस्ट्रक्टिवली कैसे रिजॉल्व करते हो? क्या आप एक कॉमन ग्राउंड ढूंढ पाते हो? कैन यू फाइंड अ विन विन सिचुएशन? Can you manage your emotions while doing so, or do you get angry when you are trying to resolve your conflicts? Optimism. रिगार्डलेस ऑफ अ सिचुएशन, क्या आप हमेशा पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो? एक सिचुएशन में आप प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करते हो या आप सोल्यूशन के ऊपर फोकस करते हो? यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन सोल्यूशन. दिस इज़ वॉट इज़ ऑप्टिमिज्म इज़ ऑल अबाउट. क्या आप एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट इनकरेज करते हो? आर यू इनकरेजिंग अदर्स टू लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ अ सिचुएशन? Now, influencing, which is a very important officer like quality as well. So, how do you inspire and motivate others?
आप लोगों को परसुएट कैसे करते हो, आप लोगों को कन्विंस कैसे करते हो, इन्फ्लुएंस कैसे करते हो. डू यू बिल्ड कंसेंसस एंड कोऑपरेशन विद इन अ ग्रुप. Empathetic listening. Are you truly understanding others by actively listening to their perspectives? आप उनके point of view को understand कर रहे हो या नहीं? Are you validating others' emotions and experiences? This is again very important. You need to validate others' emotions and experiences. You have to avoid judging anyone and you have to offer support to everyone around you. आपके इंटरपर्सनल रिलेशंस कैसे हैं. हाउ आर यू मेंटेनिंग एंड बिल्डिंग योर इंटरपर्सनल रिलेशंस. इट कैन बी विद योर कलीग्स, इट कैन बी विद योर फ्रेंड्स, it can be with your family, which is duly checked by an interviewing officer. Apart from that, GTO में आप interpersonal relations कैसे exhibit कर रहे हो. Are you fostering a positive and supportive social network again? assertiveness. क्या आप अपनी नीड्स, आप अपने ओपिनियंस एंड अपनी फीलिंग्स को कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस कर पा रहे हो. आर यू स्टैंडिंग फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स विदाउट बींग एग्रेसिव. नाउ assertion में you don't have to be aggressive. You can show assertion when you have logic in your point. Logic is needed, anger and aggression are not needed. Now, the most important aspect, that is your leadership skills. Are you inspiring others? Are you guiding others towards a common goal? Are you leading by example? Because that is what defense services are all about. You have to lead by example, and this is one of the most important qualities that you can possess. Can you demonstrate emotional intelligence effectively? Can you again foster a positive learning environment? Can you talk about inclusive work and good inclusive working team environment again? Cultural competence. What is cultural competence? You have to be aware and you have to be respectful about cultural differences. हर कोई आपके कल्चर जैसा नहीं होगा. नॉट एवरी वन विल बिलोंग टू योर कल्चर. तो आपने हमेशा हर एक की कल्चर की रिस्पेक्ट करनी है. यू हैव टू अडेप्ट your communication style and your behavior according to diverse cultural contexts. आपने हमेशा इंक्लूसिविटी प्रमोट करनी है and you have to promote diversity. And this is evident with the answers that you give in your interviewing questions, the things that you say in your group discussion, whatever you are saying in your lecturates. It is evident that can this candidate gel with others or not. डिसीजन मेकिंग स्किल्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. आपने हमेशा वेल इन्फॉर्म डिसीजंस लेने हैं एंड दिस यू विल डू बाय कंसिडरिंग इमोशनल एंड रैशनल फैक्टर्स. यू हैव टू बी रैशनल ऑलवेज. यू हैव टू बैलेंस योर इंट्यूशन. आप हमेशा इंट्यूशन बेस्ड डिसीजंस भी नहीं ले सकते. यू हैव टू यूज़ सम लॉजिक. There has to be some sort of analytical reasoning when you are taking a decision. You have to accept responsibility for your decision and you should know that what can be the likely outcomes of your decisions. You always have to accept responsibility. Now, about happiness and well being. Can you again cultivate a positive mindset? Can you pursue activities that contribute to personal happiness and fulfillment? क्या आप सिर्फ वही एक्टिविटी करते हो which gives you personal happiness, or do you pass away time, do you while away time, and then at the end of the day you realize that it hasn't been good for you, and then ultimately you get a very negative outlook from the entire day. You have to balance your work and your personal life. You really need to do that balancing of your personal life and your professional life. Your work balance needs to be done. Finally, what is conflict management? Can you identify and address conflicts? पहले तो आपको conflicts identify करने आने चाहिए. Can you identify that? When you have identified that, क्या आप उसको proactively address कर पा रहे हो या नहीं? Can you facilitate constructive discussions to resolve issues? कैसे आप एक conflict को resolve करते हो?
क्या आप कोलैबोरेटिव हार्मोनियस एनवायरनमेंट प्रमोट कर रहे हो where everyone has a shared vision and everyone can come to a common ground and can resolve conflicts friendly in a very friendly manner? Now, if you work on these ways, you can effectively manage your emotional intelligence. Effective intelligence is a hidden aspect of officer like qualities. आप self introspection करिए and tell us in the comments section the areas that you need to work on.